चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन एवं सेवा भारती के साथ 97वें वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु और शिष्य के बीच जो ये रिश्ता है सनातन काल से, खासकर भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है और शिष्य को कुछ जिंदगी में हासिल करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। हम अक्सर देखते हैं, अक्सर इस बात पे चर्चा करते रहते हैं कि माँ बाप के समक्ष चैलेंजेस क्या होते हैं, लेकिन गुरु के समक्ष अपने शिष्यों को शिष्य बनाने में, उनमें डिसिप्लिन लाने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और आज के वैश्विक युग में जहाँ हर चीज प्रोफेशनलिज्म हो गई है, हर चीज में पैसा आ गया है, किस प्रकार एक गुरु एक विद्यालय के 300 या 400 बच्चों को संभालता है और हर बच्चे में अपने बच्चे की छवि देख करके उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। इन सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर रितु पल्लवी। डॉक्टर रितु पल्लवी केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 में प्रिंसिपल हैं। आप पठन पाठन से काफी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। कादम्बिनी में कविता, पूर्वाग्रह में लेख, गांधी और उनकी जीवन यात्रा में लेख, इस तरह की काफी सारे पत्र पत्रिकाओं में मैडम के लगातार लेख प्रकाशित होते रहे हैं। निर्मल वर्मा के उपन्यासों पे आपने शोध किया है। सीता नाम से आपका एक हिंदी काव्य संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है। तो मैडम से मैं आग्रह करूंगा कि आज का जो विषय है चैलेंजेस फेस बाय यू स्पेसिफिकली इन अ ग्रोइंग चिल्ड्रन, जब बच्चे बड़े होते हैं तो एक गुरु के नाते, एक शिक्षक के नाते आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और उन चैलेंजेस से कैसे आप ओवरकम करते हैं, इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर रितु पल्लवी को। मैडम, ओवर टू यू। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज स्पष्ट है? यस मैम, बिल्कुल जी। मैं डॉक्टर रितु पल्लवी, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 भोपाल, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस विषय के साथ यहाँ उपस्थित हुई हूँ वास्तव में वो मेरा कार्य है और इसलिए इसमें मेरी रुचि भी है। हम सभी जानते हैं कि विद्यालय एक प्रयोगशाला है, एक ऐसी प्रयोगशाला जिसमें हम देश का भविष्य तैयार करते हैं और ये भविष्य और कोई नहीं है, हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे विद्यार्थी हैं। मैं प्राचार्य हूँ और मैंने देखा है कि प्राचार्य की अवधारणा, उसका चरित्र एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बनाया जाता रहा है जो कि बहुत सख्त मिजाज है और विद्यालय के वातावरण को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। समय के साथ मुझे लगता है अवधारणाएं बदली हैं और आज के समय में प्राचार्य केवल अनुशासन का नियंता नहीं है, यानी हम कहें कि वो प्रिंसिपल जो है वो केवल एक आर्बिट्रेरी अथॉरिटी नहीं है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं है, बल्कि आज वो विद्यालय का एक इंस्ट्रक्शनल लीडर या पीडिगोगिकल लीडर बन गया है। अब ये पीडिगोगिकल लीडर जो है वो जब चलता है और अपने साथ अपनी पूरी टीम को लेता है तो वहां पर उसका जो मिशन या विजन होता है विद्यालय के लिए, वो जो लक्ष्य निर्धारित करता है वो एक शेयर्ड मिशन होता है। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स यानी सभी हितधारक समान रूप से भागीदारी करते हैं, चाहे वो हमारे विद्यार्थी हों, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये सब मिलकर आवश्यकता अनुसार जो विजन और मिशन तैयार करते हैं उसके लिए कार्य करते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग पर भी बीच बीच में असेसमेंट किया जाता है, उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। और मैं बता दूं कि ये जो मॉनिटरिंग है, ये जो सुपरविजन है, ये भी ऑथोरिटेटिव नहीं होता, यानी आज के समय में किसी एक के पास निरंकुश जो है वो प्रशासन का अधिकार नहीं होता, बल्कि ऐसे में उसे डिसेंट्रलाइज किया जाता है। सभी मिलकर देखते हैं कि कहाँ पर क्या चुनौतियां रहीं, क्या कमी पाई गई, क्या शॉर्टकमिंग्स थी और फिर उस दिशा में कार्य करते हैं। इस तरह बढ़ते हुए सतत निरंतर विद्यालय में उच्च गुणवत्ता के लिए सब मिलकर जब कार्य करते हैं तो ये एक तरह से इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप या जैसे हम कहें कि पीडिगोगिकल जो लीडरशिप है
उसका प्रारूप बनाता है, उसकी रूपरेखा बनाता है। इन लक्ष्यों को प्राप्ति की ओर जाना तो चुनौतीपूर्ण होता ही है। और मैं देखती हूँ कि विद्यालय में प्राचार्य जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, फाइनेंशियल हेड है, एकेडमिक हेड है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है प्राचार्य का वो है एक मोटिवेटर का, इंस्पायर करने का। और जब मैंने कहा कि एकेडमिक लीडर है वो, तो सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि कैसे विद्यालय के वातावरण को, बच्चों को और शिक्षकों को एक साथ लेकर जॉयफुल बनाया जाए, जॉयफुल बनाया जाए। और ये जॉयफुल ऐसा हो कि फिर हम निरंतर परस्यू करें किसके लिए, एक्सीलेंस के लिए, यानी सर्वोत्तम की ओर बढ़ें। विद्यालय में जो शैक्षणिक स्तर है उसकी गुणवत्ता को उच्चतर स्तर तक पहुंचाएं। अब अगर मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो हम जानते हैं कि यह देश की एक अग्रगण्य शिक्षण संस्था है, और ऐसे में उस विरासत को अपने बच्चों के साथ आगे ले जाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ पर हमारे पास सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड है, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में है, एक मानक प्रारूप है हमारे पास, एक स्टैंडर्ड करिकुलम है, सिलेबस है, बुक्स हैं, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले शिक्षक हैं, ट्रेन टीचर्स हैं। हमें ये सुविधा भी है कि हम उन टीचर्स को समय समय पर ट्रेन करते हैं, अद्यतन करते हैं, अपडेट करते हैं। हम भी विभिन्न प्रकार की एकेडमी से जुड़े रहते हैं। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, भारत सरकार की जितनी पॉलिसी हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, शिक्षा का अधिकार है, इसी तरह से बच्चों को जब हम एक्सपोजर देते हैं, बहुत सारे आयामों से उनको जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जब मैं एकेडमिक की बात कर रही हूँ तो उसमें स्पोर्ट्स भी है, को करिकुलर एक्टिविटीज भी है, क्योंकि ये बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात है। तो ये जो एक्सपोजर हम उनको दे पाते हैं, क्योंकि जो भारत सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जितने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, उसका हम सब हिस्सा बनते हैं। तो एक तरह से सारे रिसोर्सेज हमारे पास हैं, सारी मानक जो एक व्यवस्था हो सकती है उसके बीच में हम हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में एक गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक स्तर को बनाने के लिए और विद्यालय के वातावरण को उस उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के लिए क्या ये पर्याप्त है? मैं कहूंगी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आज के समय में हम अपने बच्चों को जिस तरह से देखते हैं, हम उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विद्यार्थी बनाना चाहते हैं। आज हम 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करते हैं, सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं। हम कहते हैं 4 C's की जरूरत है, जहाँ पे कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इनोवेशन के लिए हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। हम डिजिटल, हमारे बच्चे जो है वो डिजिटली साउंड हो, ये बहुत आवश्यक हो गया। जब इतनी सारी आयामों में तैयार कर रहे हैं तो ऐसे में ये काम आसान नहीं होता, और आसान इसलिए भी नहीं होता क्योंकि हमारी महत्वाकांक्षा बच्चों के साथ जुड़ी हुई है। मैंने पहले ही कहा कि हम यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर चला रहे हैं जो कि देश के भविष्य को बदलेगा। अब ऐसे जो वातावरण में मैं एक उदाहरण देकर समझाना चाहूंगी कि एक बच्चा है रोहन, वो विद्यालय आता है और उसको लगता है कि विद्यालय का वातावरण बहुत उबाऊ है, उसमें किसी गतिविधि को लेकर उत्साह नहीं आता। एक दूसरा व्यक्ति है, एक दूसरा बच्चा है जो कि है रमन, और मान लीजिए कि वो विद्यालय आता है और उसको लगता है कि जो कुछ विद्यालय में गतिविधियां चल रही हैं वो उसके स्तर से बहुत ऊंची, बहुत कठिन है, उसके लिए कुछ भी करना संभव नहीं होता और वो निराश होकर विद्यालय से वापस चला जाता है। क्या मानक सारी प्रबंध के होते हुए भी इन दो तरह के बच्चों के रहते हुए हम विद्यालय में शिक्षा के उच्चतर स्तर को प्राप्त कर सकते हैं? और ऐसे केवल 2 बच्चे नहीं है, इनके पीछे न जाने कितने बच्चे हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर हमें शिक्षण में, विद्यालय में इस तरह का वातावरण बनाना है जो कि उत्तरोत्तर आगे की ओर और प्रोग्रेसिव हो, हम प्रगति की ओर जाएं, तो उसके लिए केवल एक मानक प्रक्रिया का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ हमें कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना होता है। क्योंकि मैं मानती हूँ कि ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक समावेशी प्रक्रिया है।
यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन तो जरूर होता है, पर ये कोई जादू ही नहीं होता। आप इसको इस बात से समझिए, हमने देखा है कि बच्चे बहुत इन्वॉल्व होकर जो है वो वीडियो गेम्स खेलते हैं। कोई भी वीडियो गेम देख लीजिए, बच्चे कभी ग्रैनी खेल रहे हैं, माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं, टेम्पल रन भी बहुत इन्वॉल्व होकर खेलते हैं। ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे एक मनोविज्ञान है। जिन फॉर्मेट में, जिन प्रारूप में ये गेम्स बनाए गए हैं, उसको स्टडी करने की जरूरत है। बहुत आसान स्तर से ये लोग शुरू करते हैं, फिर बच्चे को थोड़ा सा चैलेंज देते हैं और उसको अगले स्तर पे ले जाते हैं। जब उसकी रुचि अगले स्तर पे हो जाती है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, वो फिर अगले स्तर पे जाता है। इस तरह उसकी रुचि निरंतर बनी रहती है और वो स्तर दर स्तर पार करता रहता है। तो मुझे लगता है कि यही सतत प्रक्रिया विद्यालय में भी अपनाने की जरूरत है। यहाँ पर एक और बहुत बड़ी चुनौती है इन बच्चों के साथ जो हमें देखने को मिलती है और जिसका सामना हमें करना होता है, वो है समावेशन की। केंद्रीय विद्यालय वैसे भी हेट्रोजीनियस ग्रुप के बच्चे यहाँ पर आते हैं, केवल बालक बालिकाएं ही नहीं, बल्कि विभिन्न जाति के, धर्म के, बहुत सारे प्रदेशों से, प्रांतों से, विभिन्न भाषाई बच्चे यहाँ पर आते हैं। उनका सामाजिक, आर्थिक, उनकी पृष्ठभूमि बहुत अलग होती है। ऐसे में हर बच्चा समान महसूस करे, कोई बच्चा अपने को उपेक्षित महसूस ना करे, उसे उसे भय का वातावरण ना यहाँ पर दिखाई दे, ये बहुत जरूरी है। इस समावेशन के लिए भौतिक वातावरण तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया गया है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की हम जो बात करते हैं, CWSN वाले जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, वो बच्चे भी आ रहे हैं, वो भी हमारे जो सामान्य शिक्षण प्रक्रिया का ही जो है वो भाग है। तो ऐसे में वो भी इसे विद्यालय का अपने आप को अंग ही समझें, भाग ही समझें, ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए इंक्लूसिव जो एनवायरनमेंट है वो विद्यालय का न केवल भौतिक रूप से बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी बना रहे, ये बहुत जरूरी है। हम सब ने पढ़ा है, शिक्षाविद हैं जो जिड्डू कृष्णमूर्ति जी, वो इस बात पर बहुत बल देते हैं कि विद्यालय का जो वातावरण है वो निर्भय होना चाहिए, अभय होना चाहिए, जहां पर बच्चा अपने को एक्सप्रेस कर पाए, चाहे वो लिखित रूप से हो या मौखिक रूप से हो, वो अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में सक्षम हो, लोग उसकी बात को सुने, क्योंकि वास्तव में ये सारा प्रयास जो है वो विद्यार्थियों के लिए ही चल रहा है। तो ये जो इंक्लूसिवनेस की जो जरूरत है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि हर तरह के बच्चे को उसकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं के साथ यहाँ पर समावेशित किया जाए। मैंने शुरू में बात की थी अनुशासन की। यद्यपि आज अनुशासन का जो प्रारूप है वो बदल गया है ना। आज हम उस तरह के शासन की बात नहीं करते जहां पर कि एक जगह पर जो है वो सारा अनुशासन नियंत्रित हो, या एक जगह पर जो है वो सारी अथॉरिटी या पावर हो। मैंने शुरू में ही बात की कि अब उसे डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। आज हम देखते हैं कि कॉर्पोरल पनिशमेंट तो बहुत दूर की बात है, उसे तो राइट टू एजुकेशन ने वैसे ही निषिद्ध कर दिया है। इसके अलावा भी अनुशासन इस तरह का होना चाहिए जिसमें बच्चा निर्भय महसूस करे। बच्चे आजकल बहुत संवेदनशील हैं, हम सबको भी उसमें संवेदनशील बनने की आवश्यकता है। सेंसिटिव बच्चे हैं, बच्चे अपने घर के एनवायरनमेंट से जब यहाँ पर निकल कर आते हैं तो विद्यालय में भी उन्हें इसी तरह का संबल प्राप्त हो, ये बहुत आवश्यक है। अब इस अनुशासन को कायम करने के लिए, जैसा मैंने कहा कि आज उसका प्रारूप, उसका फॉर्मेट बदल गया है। अगर हम बच्चे को जबरदस्ती सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो उसकी ऊर्जा जो है वो नकारात्मक चीजों की ओर चली जाएगी। हमें प्रयास ये करना है कि अब ये जो अनुशासन हो, ये दायित्वपूर्ण अनुशासन हो, रिस्पॉन्सिबल डिसिप्लिन। रिस्पॉन्सिबल डिसिप्लिन बनाने के लिए बच्चे को आप उस अनुशासन नियंत्रण जो आपकी जो समिति है उसका भाग बनाएं। हम देखते हैं विद्यालयों में जो है आज स्टूडेंट काउंसिल है, डिसिप्लिनरी कमिटीज हैं, बच्चे इन सब का भाग है। यहाँ तक कि जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन है उसमें भी बच्चों को रखा जाता है। तो बच्चों को इनका भाग बनाने की, या हम देखते हैं कक्षा के स्तर पे बहुत सारी जो है निर्मल सेना बनाई गई, कहीं पर जो है मॉनिटर्स बनाए गए। तो ये जो है ये एक दायित्वपूर्ण अनुशासन का ही हिस्सा है। इससे मैंने देखा है कि कई बच्चे जो कि नकारात्मक चीजों में लगे हुए थे, जब उन पर स्वयं जिम्मेदारी आई, जब खुद ओनरशिप की भावना उनमें आई, तो वो बदल गए और विद्यालय में अनुशासन कायम करने में उन्होंने स्वयं बहुत बड़ा भूमिका निभाई।
एक और चुनौती अगर हम देखें जो हमारे इन बच्चों के बीच में देखने को मिलती है, क्योंकि बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, वो है एडोलेसेंस से जुड़ी हुई समस्याएं। वास्तव में एडोलेसेंस कोई समस्या नहीं है, ये तो वया संधि है, बच्चों की एक सामान्य प्रक्रिया है उनके बड़े होने की, लेकिन उससे जुड़ी हुई कई समस्याएं विद्यालय परिवेश में देखने को मिलती है। एक बच्ची मेरे पास क्लास 12th की आई और वो अपनी पूरी कहानी लेकर आई थी, जिसमें कि ये बता रही थी वो कहानी कि वो उसे ऐसा लगता है कि उसके माता पिता जो हैं वो उसकी प्रगति के बहुत बड़े दुश्मन हैं। जब मैंने पता किया तो छानबीन से कि इसी तरह की कहानी लेकर वो जो है वो कई शिक्षकों के पास भी गई है, प्राचार्य तक आई थी, तो इसका मतलब उसके मन मस्तिष्क में कुछ चल रहा था, कुछ जो है कुछ आंदोलनकारी उसके मन में जो है वो प्रक्रिया चल रही होगी, ऐसा मैं मानती हूँ। हमने उसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा और फिर देखा कि ये बच्ची जो है ये ADHD का शिकार थी। इस उम्र में बच्चों में जो ये मनोवैज्ञानिक ग्रंथियां हैं ये आ जाती हैं, ये स्वाभाविक है। कई बच्चे जो हैं वो आकर्षण जो है प्राप्त करना चाहते हैं, चारों ओर से ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, सबका अपनी ओर, इसलिए इस तरह की जो है वो प्रतिक्रिया वो दिखाते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं बाइपोलर जो सिंड्रोम है वो भी बच्चों में देखने को मिलता है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बच्चों में जो है वो आपसी संबंध को लेकर, क्योंकि यहाँ पर को एजुकेशन है तो बच्चे जो है वो लड़के लड़कियां सब साथ में रह रहे हैं, वहां पर भी कई मनोविकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत संवेदनशील रहने की जरूरत है, और न केवल संवेदनशील रहने की बल्कि आज के समय में तो ये भी जरूरत है कि हम इससे संबंधित कोई ना कोई प्रशिक्षण जरूर लें। हमारे विद्यालयों में जैसे गाइडेंस और काउंसलिंग की जो ट्रेनिंग दी जाती है, अब तो दीक्षा प्लेटफॉर्म के अंतर्गत भी वो दी जा रही है, कई शिक्षकों ने उसके अंतर्गत जो है वो प्रशिक्षण लिया है, ये बहुत जरूरी है ताकि हम बच्चों की समस्याओं को समस्या ना रहने दें बल्कि उसका समाधान निकालें। एक जो समस्या आती है वो, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन या पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। ये ट्राइपोलर जो है वो प्रक्रिया है, जिसमें एक कोने पर जो है अभिभावक है, एक तरफ जो है वो बच्चा है, और दूसरी तीसरी तरफ जो है विद्यालय है। अब इन तीनों के बीच में यदि संतुलन बना रहेगा तो फिर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ जो अभिभावक चाहता है शिक्षक भी वही चाहता है, विद्यालय भी वही चाहता है। तो ऐसे में यदि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि हम कई माध्यमों के द्वारा उनसे जोड़ने का प्रयास करते हैं, हमारे विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी की जो मीटिंग होती है उसका भी पेरेंट्स भाग होते हैं, PTM है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन है, उसमें भी पेरेंट्स का भाग होते हैं, और इसके अलावा भी कई बार पत्राचार के द्वारा, कई बार विद्यालय की अन्य गतिविधियों से उनको जो है वो उनके संज्ञान में लाया जाता है। और इस प्रकार मैंने ये देखा है कि जहां पर पेरेंट्स अवेयर हैं और वो इन्वॉल्व हैं बच्चे की प्रगति के लिए, वहां पे रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिलते हैं और शिक्षक भी वहां तक पहुंच पाता है, और बच्चे की प्रतिभा का, जैसे हम कहते हैं ना कि जो उसके अंदर वास्तव में वो एक जो छुपी हुई प्रतिभा है और जिसका कि मैनिफेस्टेशन होना ही चाहिए, क्योंकि एजुकेशन अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन है, आपके अंदर जो पहले से ही गुण है उनका वहां तक पहुंचा पाता है शिक्षक उसको। तो ये एक बहुत जरूरी है, मैं इसे चुनौती ही मानती हूँ विद्यालय के परिवेश में और बढ़ते हुए बच्चों के साथ, कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जो है वो विद्यालय को यदि पॉजिटिव सकारात्मक मिलता है तो उसके परिणाम अच्छे देखने को मिलते हैं। अंत में मैं बात करूंगी कि पोस्ट कोविड जो चैलेंजेस अभी हमको विद्यालय में देखने को मिले हैं। देखिए, बहुत विषम परिस्थितियों में हम सब गुजरे, लॉकडाउन रहा, बच्चे भी रहे, हमने उनके हाथ में मोबाइल दिया, ऑनलाइन एजुकेशन बच्चे प्राप्त कर रहे थे, इंटरनेट उनके हाथ में था। इसके बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, और बच्चे अब जब लॉकडाउन के बाद पोस्ट कोविड विद्यालय आए हैं तो कई तरह की समस्याएं जिनका सामना आज हम कर रहे हैं। एक तो बच्चे जो है वो आभासी दुनिया से ज्यादा जुड़ गए हैं, सोशल मीडिया का प्रभाव उन पर बहुत ज्यादा है, बहुत सारे हैंडल्स हम जानते हैं, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन सब का जो सकारात्मक प्रयोग है वो तो बच्चे इतना नहीं कर पाते, उतना उपयोग नहीं कर पाते, लेकिन डिस्ट्रैक्शन है ना, और जो उनकी ऊर्जा लगनी चाहिए सही दिशा में वो गलत दिशा की ओर मुड़ जाती है। तो ये जो आभासी दुनिया में बच्चे रहना सीख रहे हैं, या उनके मित्र ऑनलाइन और इन सभी माध्यमों पे बन गए हैं, उससे उन्हें बाहर निकालने की जरूरत पड़ रही है वर्तमान समय में विद्यालय में। दूसरी समस्या मैंने देखी है एक साइबर बुलिंग की, क्योंकि ये बच्चे जो हैं जो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए थे
कई ऐसी समस्याएं देखने को मिली। कुछ बच्चों को विद्यालय बुलाना भी पड़ा, उनके अभिभावकों को भी बुलाया, क्योंकि ऐसे बच्चे थे जो कि इन ऑनलाइन माध्यमों में अपनी जो है डिफरेंट आईडी बनाकर जुड़ गए और आईपी एड्रेस से उनका पता लगाया गया, क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरह की ऑब्जेक्शनेबल जो है वो चीजें जो है वो डाली थी, जो कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए ठीक नहीं है उन प्लेटफॉर्म्स पे। बच्चों के अभिभावकों को बुलाकर और बच्चों को समझाया गया कि अभी ये इनकी संवेदनशील उम्र है, यदि बात आगे बढ़ती है तो फिर वो साइबर क्राइम की श्रेणी में जाएगा, और साइबर क्राइम या पुलिस से संपर्क इस उम्र में बच्चों के लिए बहुत नकारात्मक सिद्ध होगा। एक और चीज देखिए, जो पोस्ट कोविड हम लोगों ने, बच्चे थोड़े आलसी हो गए हैं, है ना। कुछ बच्चों, बल्कि हम जब पीडागोजी की बात करते हैं तो आजकल जो है ह्यूटोगोजी जो है वो बहुत प्रचलन में है। ह्यूटोगोजी जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि बच्चे सेल्फ मोटिवेट होकर पढ़ने लगे, वो कोविड समय में। तो ये तो है, लेकिन ज्यादातर बच्चों में ये आलस की जो प्रवृत्ति है वो भी बहुत देखने को मिल रही है। ये आलस कैसा है कि बच्चे जो विद्यालय जाना उनके दिनचर्या का भाग था, अब वो रोज जाना उनके लिए वो भी एक बड़ा काम हो गया है। बच्चे लिखना नहीं चाहते, टाइपिंग से काम चलाना चाहते हैं, और जब लिखेंगे नहीं तो अच्छा अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो ये जो लर्निंग गैप आ गया है बच्चों के, मैं कहूँगी पोस्ट कोविड, उसको पूरा करने की जरूरत है। बहुत सारे कौशल, बहुत सारे स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज जिसमें वो पीछे पिछड़ गए हैं, और जो कि सोशल स्किल्स आज बहुत जरूरी है। जब मैं बात करती हूँ 21st सेंचुरी स्किल्स की, तो उसमें लाइफ स्किल, मतलब लर्निंग फॉर लाइफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल हम अपने बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ्लेक्सिबिलिटी, टीम लीडरशिप, इस तरह के गुणों का विकास कर रहे हैं। इसमें बहुत जरूरी है कि बच्चा जो है वो अभिव्यक्त करता रहे। तो ये जो लर्निंग गैप है उसे भरने की जरूरत है। अब मैं अपनी बात के अंत में यही कहूंगी कि मैं जहां पर हूं, यहां से बहुत सारी समस्याएं दिखाई देती हैं, बहुत सारी चुनौतियां दिखाई देती हैं, लेकिन उन चुनौतियों और उन समस्याओं के साथ मुझे समाधान भी दिखाई देते हैं। और न केवल समाधान, बल्कि हमारे बच्चे और उन परिस्थितियों में बहुत सारी संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। क्योंकि मैंने बात जो शुरू की थी कि हम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसे में संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए, और मैं समझती हूँ कि मैं अपनी बात को यहाँ पे प्रेषित कर पाई होंगी। और जिन चुनौतियों का सामना हम विद्यालय के परिवेश में कर रहे हैं, वो बच्चे पूरी कम्युनिटी में हैं, सभी उन बच्चों के संपर्क में आते हैं, और हम सब मिलकर जरूर उन बच्चों के उनके लक्षित अधिगम और उद्देश्यों तक पहुंचा पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छे शब्दों में आपने चुनौतियों के बारे में बातचीत किया। यस, लर्निंग गैप एक बहुत बड़ी समस्या कोविड के बाद निकल के आई है। आप अगर समय हो तो मैम जुड़े रहें, हम अपनी दूसरी वक्ता की तरफ चलेंगे। उसके बाद कुछ प्रश्न आए हैं आपसे लेना चाहेंगे। करीबन आधे घंटे के बाद हम इस सत्र को ओपन सत्र करेंगे प्रश्न उत्तर के लिए। सो थैंक यू वेरी मच मैम, प्लीज जुड़े रहिए। नाउ वी कम टू आवर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वेबिनार। JJ Act Section 46 and Rule 25 defines the aftercare for children leaving the institutional care. It clearly states the state government shall prepare a program for the children who are leaving the institution, specifically after the 18 years. The provisions has to be made by government, the state government particularly, to ensure that if the child is not able to fulfill his daily needs on his own, so state government needs to support with the alternative cares, whatever may be available with it. So discuss more about the what are the aftercare provisions, how the agencies are able to provide the aftercare to the various stakeholders, various institutions. We have Myrna McNitt, a licensed social worker from Michigan. She is MSW from Western Michigan University, working extensively in child protection and juvenile justice. She was the board member for IFCO also for around 8 years. McNitt is an international social worker having supervised programs in several countries like Kenya and UK. To discuss more on this subject, supporting caregivers, I invite here the Myrna McNitt. McNitt, over to you. Can you listen me? Yes. McNitt, it's over Yes, to you. thank you. Thank you. Namaste. It is a great pleasure to be back with you and to have this opportunity. It's my understanding the practice is really
quite extraordinary to have two speakers from the same person come again. And so I'm very honored to be able to talk with you. I'd like to share my PowerPoint with you. And then we'll begin our discussion together. So with my colleague, who regrettably is held up in an airport, I'm going to talk about this, but I work with Karina Santa Maria, who runs a large child placing agency in Chicago. And a big part of their program is for them to provide services to care leavers. And so in our joined up work, we talk about not only how to support the care leavers, but how to improve the skills of the social workers providing the direct services. So it was, while I don't speak Hindi or Tamil or your other dialects, I could pick up obviously some of the key English words on Dr. Pallavi's speech, and the focus on policy and the introduction talking about what your government says your responsibilities are. So it brings us to this core piece that we really need to think about, how we integrate policy with good practice. And so the research over the years, and I understand you've had researchers talk to you, but the research says that care leavers struggle. They struggle moving into adult lives. And the struggles center around lack of education, not being fully employed, inadequate accommodation, substance misuse, criminal behavior, the inability to make social connections and relationships, the ability to continue education, and to be able to obtain a job that will allow them to function fully in society. So the other side of this, then, if we know those are the risks, then what we need to do is to develop a model of practice where we can teach the relevant skills to help them build healthy relationships, and that we can reduce the risks for this population as they make the difficult transition into independent living. So as I was thinking about my work with Karina and with the young people we work with, and thinking about my reading and research and practice, Dr. Abraham Maslow's model of the hierarchy of needs provides us with an interesting framework to understand that we have to start in the most basic areas to help to get that young person to the full functioning of self-actualization, where they can move into society as a contributing member. So we have to then have practical services for care leavers, and it's multidimensional and it's interactional. So it isn't just in one area at one time. And so we need to have a concrete approach, a very basic approach to help care leavers transition from that of a foster child living in a residential facility or perhaps a family foster care to that of becoming a young adult. And as I was listening to Dr. Pallavi's speech, there were words that resonated for me, that we have to support all young people. We have to assess for their mental health needs, for their developmental challenges around learning. And so this interactional model needs to be very inclusive of the wholeness of the child. So it's a process. It isn't something that happens overnight. It's something that
as your government has said, you have a responsibility for. And so in looking at the literature in the UK and in the United States, is that we support young people into early adulthood. So age 21 to 26, that a care leaver may be leaving the system as young as 16, but they may remain in for as old as 25. And that they have to be in care for a period, according to British law, for at least a total of 13 weeks. So it places a burden on us as policymakers and as practitioners to identify a young person in need of services. So these young people that are in residential care need to have us assess for their needs and develop what is called in the UK a pathway plan. And so one of the foundational pieces that we start with is that if the child's living with carers, is there a way for them to stay in the family? If they're in a residential facility or with carers and they're leaving, is there a way for them to stay nearby? Is there the ability to reconnect them to their birth family? McNitt, sorry to interrupt you. Your slide is still, it's not moving actually. You don't see the slide that I'm reading? Only one slide is still, so you need to go on the second slide, another slide also. I'm on slide 4. You on slide 4, so only slide 1 is visible. So you please click on slide 4. Maybe you need to refresh, Yeah, Myrna. you need to refresh it. Okay. Can you see this now? Yes. It's You okay. see Yes, slide 2 now? yes. Okay, and that was my apology. I thought you could see. So the need for this comprehensive plan to reduce risks. And I'll come then to Maslow's hierarchy of needs. And this is going to be our conceptual framework. This is going to be the way we develop a model of practical skills to work with these young people. Can everyone see this now? Yes. Okay. And so what I was saying is it needs to be multidimensional and interactional, because children develop, as Dr. Pallavi was saying, children develop in many different ways with many different challenges. And adolescence itself is a very complex period of development. So as these young people have grown up in the care of the state, they'll need to have us help to develop ways for them to move through the hierarchy of needs so that their basic physiological needs, the safety needs, and social needs and emotional needs are met so they can be contributing members of society. And so it requires that we work in all of those areas. And so your policy needs to define the ages where a child is, how long services are going to be provided. In the UK and the United States, it's anywhere from 21 years of age to 26. But children, they have to be in care for, under UK law, for at least 13 weeks after the age of 14. But they talk about the significance of developing a pathway plan. What is it that's going to help the child have all those needs met that Dr. Maslow talked about? And so as we start at the very fundamental point of thinking about these areas for young people, we recognize that some children or young adults may choose to stay, if they're living with a foster family, in family-based care. They may want to live nearby the
the residential facility or near the foster family. They may return with our help to birth family or kin, or they may be in an independent living accommodation where they have more and more responsibility, but also experience more social isolation. So what is it that we assess for? And again, Dr. Pallavi, I think, was talking a bit about assessment. And based on the risks that we know, a practice model needs to assess the accommodation. Where are children going? Where are young people going to live? What has their education and training been to prepare them for employment? What kind of financial support is going to be available? And what do they know about managing money? They need to be able, and again, Dr. Pallavi talked a bit about adolescence being a time of connecting with others. They need to have support to develop relationships. And it may be with family members they've been separated with, but it may be with people within their social group. They have to have life skills to be able to make good decisions about what it takes to live in society. And again, what Dr. Pallavi talking about, they have to have access to health care, mental health care, and they need to have us be there for them if a crisis comes up. So there needs to be contingency plans if something breaks down. So let's unpack each of Maslow's steps and see if we can then develop this model of practice. So when we're working with young people, we want to have trained social workers, trained childcare providers. And I've developed a term that I like to use, an independence coach. So we want to ask the child about their safety. What is it that they know? Where do they want to live? What is the ideal place of living for them where they can be successful? What about food? Are they able to shop? Are they able to cook meals? Is where they're living going to have access to water for cleaning as well as drinking? Are they knowledgeable about transportation? What skills do they have in financing and managing finances? So in this conversation that we begin to have, and it's relationship based, is what does the young person say they want their pathway plan to be? So we assess options for accommodation. As I said before, staying put with foster carers, family or kin, independent housing. And this is where our responsibility comes in as we develop programs, is what would be considered youth-friendly housing. Where I live in the United States right now, there's a community group that's actively engaging. They've taken over the responsibility of a building that they're going to house 30 young boys that will have access to education and work with the support of the community. When I was working in Africa, we had to teach the young people leaving the institution how to take public transportation, how to go out and ask for a place to live. So beginning to structure those essential skills in the conversations with the young people. And with younger teens, as we begin to prepare them for independence, do they know how to shop for nutritious food? Do they know how to prepare and cook it? And we found many times that children living in institutions don't go into the community.
So they don't know how to buy food, and they sometimes are taken advantage of financially. Establishing a budget. How much money will they have? Where will it come from? Will there be support from the ministry? Will they have to work? Will it be a combination? So how much will they have to live on? It's rather sad when we remove kids from institutions and they become part of the poorest of our communities. Teaching them how to use public transportation so that they can get to their appointments, they can get to work. So Maslow says that safety element is absolutely critical. And so we start in meeting step 1, the area of safety, the physiological needs. You should start very young, maybe with a 12 or a 13-year-old, with groups that are in the facility or the residential facility, bringing these young people together to begin to talk about how to do a budget, allowing them to prepare a meal in the facility. Very basic skills. And then developing a curriculum. And you have enormous talent in your group here. Developing a culturally relevant curriculum so that the young people can walk through the steps of how to find independent living, how they can budget, how they can cook meals, how they can use transport. So it becomes a very practical approach to hands-on. We're going to teach, we're going to show, and they're going to do. And the concept of an independence coach is a mentor or someone that can work very closely to lead a young person through this process. So in the next step within safety is really about some of what Dr. Pallavi was talking about, again, is educating young person on risk. She talked about cyberbullying, but we also know that young people leaving residential care are at high risk for sex trafficking and labor trafficking. They also need to have help to think about how they can keep their personal belongings safe. For example, not carrying all their money with them at one time. Teaching them how to be responsive to police and social workers and know how to ask for help and report if they're being exploited. How to access health care and mental health needs. Substance abuse prevention education. And then sexual health. Educate young people on sexually transmitted diseases and how to avoid pregnancies. So the independence coach can come from staff or local experts, and they can come in and they can, in the group meetings that you hold with these young people, we can bring in experts to talk to them. We can provide psychoeducational groups that meet the developmental needs and maturity of young groups. Specifically, Dr. Pallavi was talking about people with developmental delays, developmental challenges, and we approach teaching them independence differently than someone that does not. So teaching the young person about the ability to adapt when situations and risks come up can be a really important, useful skill. And some of it centers around how they can ask for help and how they can protect themselves. And then step 3 in this first part of the process is around breaking down isolation. If you read the literature on care leavers, one of the major problems is isolation. So we want to keep them in school if at all possible, and having the right school. Having, and again, Dr. Pallavi talked about this, help
Help a young person find appropriate social clubs and organizations, might be soccer or cycling or yoga, how to develop healthy friendships, things that all of us thrive on. And then the literature suggests that sometimes it's useful if there's space for these young people that have left care to be able to come back, so that physical space in the building where if they need to come back for a few hours to clear their minds, to get help, that's a really useful way to assure their success. And then teaching the young person on how to date and have positive relationships. Because not only don't we want them to be victims of cyberbullying, we don't want them to be victims of intimate partner violence, nor do we want them to use violence against another person. So as we move forward in the Maslow model, we've now gone through the safety, the physiological, and then looking about living in society. Now we're thinking about who you're becoming emotionally and connected. So you can't, and this quote really says a lot about the narrative of the young person, that you can't care about where you're going if you don't know where you've been. So and so we want to help them organize their story through life books. So to honor positive achievements, if they've had good grades, if they kept a job. And some of this might be making sure that we praise those young people even after they've left our formal care. Helping them write and keep their story in an organized way. Oftentimes children in care don't understand the disconnects that they've had from family and community. And if we can help them organize that, it can be very useful for their mental health. And so then helping them build their social identity. Who are they? And where do they fit in? And increasingly, a number of independent living projects or care leaving projects I've worked with have staff that work on family finding. So search for family and kin. And through those activities, we found a number of very successful and stable situations for care leavers. But all of this is, again, multidimensional and interactional. You can't start this on the day that the young person turns 18 or 19 and we tell them they have to leave the facility. We want, because of this, then, we want to build on resiliency. Support from different sources so that the young person sees themselves as a member of the community. They have their coach, they have their social worker. We've helped them develop social relationships, hopefully with education and employers, and all that contributes to resiliency. And teaching them, again, to ask for help, to identify and use support. So as care leavers move through the complex process of being independent, becoming an adult in society, we help them learn how to use support and to reduce exploitation. So as we get to the top, what Maslow calls this area of self-actualization, we've stayed with this young person till they're in their mid-20s to help them mature in their ability to cope. We said adaptation is a good thing. They understand and have skills to live in a society. And as we look at not only social skills, if we think about the neurological development of these young adults, the safer they feel, the more their basic needs are met,
They will have a greater cognitive ability to solve problems. And that they'll know how to use and how and when to use and give help. So as they mature, they then can become perhaps an independence coach. They can become someone that gives back to society and help meet the needs of other vulnerable youth. So, do we expect kids in this model to get through it without troubles? No. All youth struggle, even youth that live within their own families. It's part of adolescence. But it's how they see the struggle for youth in independence. So this research says that after the transition, two distinct groups could be discerned: the struggling to survive group and the thriving through the struggle group. The first group is really about the difficulties they encountered and their efforts to improve their adaptation and functioning in their lives. And that's what I've been describing for you. That's what we want. We want to support them in their abilities to adapt and survive. They were identified as young adults at risk, but they could get there. The second group, in contrast, had a more positive attitude about life in various life domains, and they thought that in the present and in the near future, they were going to be more successful. But whether you look at the first group or the second group, they both were facing the ability to adapt and survive and use their resiliency. Some are going to struggle more with those lower level needs, and they're going to need more from us. Others are going to be able to emerge, like the second group here, and reach toward that level of self-actualization. And that depends on the concrete work we do. So finally, programs need to have a fallback option. People leaving care, just like children when they grow up and leave home, they need to have an emergency plan. If something goes wrong, where can they come back to? And just the knowledge there's some place they can go back to is comforting and helps improve the outcomes for these young people. So some may need to come back more than once. Some may never come back. But having this fallback plan is important, just like having that safe space to return to. So what is the pathway plan? Again, this is where the concrete work, the very basic practice skills, it's the right of every child to have the plan. And our job is to create the roadmap with them. What do they want their plan to be for accommodation? What are their skills? Have they been in school? Do they want to continue in school? What kind of a job do they want? All of that's included in the roadmap. And again, we need the community to come in and wrap those services around. So we want to use the experts in the community. We want to use mental health experts. We want to use doctors, employers, the police, people that are committed to their success. And so with that, I'd like to open this up for some questions, and I've attached to my PowerPoint the research that I use. Thank you. To think about this. So let me come back and let me say, when I was preparing this with Shundra, I wanted to stress that I can give you a model, and what I've given you is probably a lot of what you already know, that this is what we need to know and survive in society. But when we start to think about a model, then we have to unpack it to the skills we need. And it's always my pleasure to work with you. And there's probably
a point where either drawing from your expertise or the resources that I can help through Vishundra to share with you, we can then unpack those very basic skills. What would a group look like? What would a pathway plan look like? So taking this model and really making it happen might be the next step. Thank you, McNitt. Thank you very much. We have certain questions which we will take you with you. In your slides, in one of the presentations, you have shown the age group up to 26 years. So, are you supporting aftercare facility up to 26 years? In like our country, we have 23 years, the limit. The range is from age 21 to 26. So 23 would be a reasonable age. It's the United States has picked 26 because that's where higher education ends for young people. So that's one of the major differences in our model and your model. Because correct. in Indian context, we support up to 23 years only. Well, but that still is a reasonable law. It's Okay. much better than the countries that are still only looking at 16, 17, or 18. So thank you. We'll take more questions with you. रितु मैम जुड़े हुए हैं क्या? रितु मैडम, आपसे 2 क्वेश्चन आए हैं. हाँ, एक तो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम साइबर बुलिंग. जी. Actually, Vishundra and I worked on a concept paper, which we felt that in preventing cyberbullying, that we needed to. McNitt, this question is from Dr. Ritu Pallavi, not from you. It's from. Okay, I'm sorry. Okay, no issue. देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पर बच्चों के लिए अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है और साइबर बुलिंग की अवेयरनेस हम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम के तहत करा सकते हैं. तो विद्यालयों में भी इस तरह की पहल हो और बीइंग पेरेंट भी हम बच्चों को अवेयर करें कि साइबर बुलिंग है क्या. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर कि बच्चे अननोन इंडिविजुअल्स के साथ, आइडेंटिटीज के साथ जुड़े रहते हैं और जुड़ने के बाद जो है वो कुछ, मैंने स्वयं जो है वो कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर कि बच्चा जो है वो किसी के साथ जुड़ गया ऑनलाइन और उसके बाद उसने जो है वो उसका फायदा उठाया. इस तरह के कई केसेस जो है वो सामने आए हैं. तो साइबर बुलिंग जो है उसके लिए सबसे पहले तो अवेयरनेस जरूरी है. हम बच्चे को बताएं, उसको जो है वो ऐसे कई एग्जाम्पल्स देकर और फिर जो नेक्स्ट लेवल है उसमें अगर मान लीजिए कि फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई समस्या आई जाती है तो वहाँ बच्चा रिपोर्ट जरूर करे. इस तरह के पीयर ग्रुप्स क्लासेस में बन जाते हैं, विद्यालय में बन जाए, जहाँ पर कि पहले तो बच्चा रिपोर्ट करे और उसके बाद रिड्रेसल के लिए भी जो है वो कमेटी होनी चाहिए. और जब ये लगता है कि विद्यालय लेवल पर या आपके अपने लेवल पर वो सॉल्व नहीं हो सकता तो फिर हमें इसे साइबर क्राइम सेल्स में रिपोर्ट करना होता है. ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी हो जाती है, आप देखेंगे नंबर्स मिल जाएंगे हर स्टेट के अलग अलग, और रिपोर्ट करने के बाद फिर वो लोग रिप्लाई करते हैं. और एक ऐसा केस मैंने स्वयं विद्यालय में देखा, वहाँ पे रिपोर्ट किया और रिपोर्ट के बाद जब रिपोर्टिंग हुई उनके पास कॉल गया तो संबंधित व्यक्ति स्वयं विद्यालय है और उन्होंने लिखित में जो है वो माफीनामा दिया और उसके बाद उस केस को क्लोज किया गया. तो हमें अपने बच्चों को अवेयर करना होगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. Thank you. So now the session is open. Anyone who want to ask the question from either from Dr. Ritu or from Myrna, they can raise your hands and I'll take up the questions. Session is open now. Vasundhara ma'am, you have raised the hand. Vasundhara ma'am. Yeah, hi. This question is from Myrna. Myrna, in fact, you have given a very good roadmap and the pathways from UK and US. But the scenario in India is that since child is a state matter, so all these guidelines and the policies have to be drafted by the state. So, and I don't think there are hardly any 1 or 2 states which have really drafted some aftercare guidelines. So I just want, is there any guideline from your country which you would like to share with us so that we can have a look at it and then think whether we can have those kind of things in India and suggest to our state governments as a matter of policy.
So that is my question, because we have that aftercare, the state government has to come up with the guidelines, but hardly any government has done it. So I'll be really happy if we can have something from US or from UK. Well, let me start first with the resources. In the references in my PowerPoint, there is a document from the UK on pathway planning. Okay. And I can send you the link, or I can tell you now, the John Chafee Act in the United States provides the guidelines for independent living or for care leaving. Okay. And so that would give you two models that are Western models. I always think the excitement of this work is what is culturally relevant for you in India. Yes, What works. definitely. And this is where I think talking with people like UNICEF and presenting them with the concerns of this body and saying, we would like to do a pilot so that we can present it to the ministries and say, this is how we think India should go forward. Okay. So maybe after going through that policy, we can just pick up the relevant things, and then we have to include our own thing, which is culturally relevant and also very specific to India. That would be important. Well, I think that the conversation we just had about age, I think that 23 is a reasonable age if that works in your culture. Yeah, but that is not for each and every children. It is basically in exceptional cases, the CWC has the power to support that particular child from till the age of 23. So it's as a matter of rule, it's not applicable to all. If I'm not wrong, Kripashankar ji. Ji, I have another question with Myrna related to that only. In our country, like we have child welfare committees who are looking after the entire benefits of the child. What are the similar provisions in other countries and your country? Do you have similar body or something different? Up until the child reaches the age of 19, the courts function like your child welfare committees. They review the cases. Once the child is of legal age, but still needs the social supports, then the relevant ministries, the Department of Health and Human Services, provides the oversight. Okay. अनिल जी ने हैंड रेज किया. अनिल गौर जी अपनी बात रखें. Yes, my question is to Dr. Ritu. मैम, हमारे जो मेंटेलिटी है हमारे भोपाल में या फिर इंडिया में, आप बच्चों के पेरेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं? वो एडमिशन्स के लिए कई आपको रिफ्यूज करने पड़ते हैं चैलेंजेस कि हाँ इसका एडमिशन लेना है, इसका नहीं लेना है. तो कंट्रोवर्सीज को और ये चैलेंजेस को आप कैसे हैंडल करते हैं? It will be a big challenge to you, ma'am. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि बच्चों का एडमिशन, क्योंकि अभी अगर मैं बात करूं कि अभी क्लास फर्स्ट के लिए हमने एडमिशन ओपन किया था, ऑनलाइन हुआ है, और 3,500 जो है वो एप्लीकेशन आई थी 80 सीटों के लिए. ऐसे में बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, बहुत मिनिस्ट्री से फोन और बहुत जगह से फोन आते हैं, बहुत सारी. यहाँ पे सबसे बड़े जो हेल्प होती है हमारे लिए वो ये है कि हमारी जो एडमिशन गाइडलाइंस हैं वो बहुत क्लियर हैं, और ये सब कुछ जो है वो पब्लिक डोमेन में है. मतलब कहीं पर कोई भी चीज जो है वो अनक्लियर नहीं है या हम उसमें कुछ भी हिडन नहीं है. तो आज ये डिजिटाइजेशन के एज में सब कुछ जब इतना अपरेंट है, वेबसाइट पर डिस्प्लेड है, तो उसमें हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाते. मेरे पास अगर शिक्षा मंत्री जी का भी फोन आ जाता है तो मैं उनको भी बता देती हूँ कि ये इस तरह की गाइडलाइन है सर, उसके बियॉन्ड जाने की कैपेसिटी मेरी है नहीं, इतनी अथॉरिटी मेरे पास है नहीं. इस तरह से तो टैकल करते हैं. बाकी आते हैं कुछ पेरेंट्स और कुछ कि ऐसा नहीं हुआ तो हम फिर मीडिया में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे. तो वो सब चीजों में मैंने कहा कि जब हम सही चल रहे हैं तो उसमें डरने की आवश्यकता नहीं होती. Thank you. Thank you. Dr. Lakshman has raised the hand. Dr. Lakshman. Namaste from Tripura. And Dr. Ritu, you have clearly discussed about everything. That the school is a transformation center where everything is transferred to the child in terms of the education or learning system. Every discipline, all of the guidance and maintained so far as the government guidelines and rules and regulation. But is it sufficient for the development of human being? Where manifestation is the perfection of the education.
perfection of the human being, is it possible on the part of any teacher to develop the humility by the students after giving a physical learning system, everything by playing the what are them responsibility, not responsibility, duty. I like to emphasize the word duty, not the responsibility. Whether the teacher is confined within a school period, rest year period, teacher beyond the school period. So what? डॉक्टर साहब आपका क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज योर क्वेश्चन? डॉक्टर लक्ष्मण, व्हाट इज योर क्वेश्चन?